वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो कि हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझ सकें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर। अब ऐसा क्यों होता है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकते? मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि किसी पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कि किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट हो रही है। मान लो ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा होता नहीं है, पर मान लो ऐसा होता है और दो पॉइंट पे ये किसी एक पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसका डायरेक्शन इस पॉइंट पे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सिमिलरली इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो रही है उसका इस पॉइंट पे डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। अब ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर है और वो एक विशेष डायरेक्शन में ही जा सकती है, उसका डायरेक्शन निश्चित होगा। यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी कि वो इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल चीज है इसलिए हम कहते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी चार्ज के लिए ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि हमें उसकी प्रॉपर्टीज पता होती हैं। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो उससे रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। ओके, ऐसे ही अगर एक कोई नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो वो इनवर्ड रेडियली उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर देंगे। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो सब चार्ज के सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो ये सारी लाइंस जो रेडियल लाइंस होंगी वो इस पर परपेंडिकुलर होंगी इस चार्ज के सरफेस पे। मान लो एक सिस्टम है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, एक डायपोल सिस्टम है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। तो नेगेटिव चार्ज पे तो एंड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज के परपेंडिकुलर होगी। बहुत सारी ऐसी लाइंस होंगी, ठीक है, जो हमने ड्रॉ करनी है। अब इनका डायरेक्शन कैसे देंगे? पॉजिटिव चार्ज से जो लाइन जाती हैं वो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होती हैं। तो ये एरो इस तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज पे वो एंड होती हैं। एक एरो इधर होगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई एक ऐसे सिस्टम की जो कि जिसमें एक पार्ट नेगेटिव है और दूसरा पार्ट पॉजिटिव है। अब मान लो दोनों सिमिलर चार्जेस हों, या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मान लो पॉजिटिव है तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके परपेंडिकुलर तो होंगी, साथ में वो इसी चार्ज इन दोनों चार्जेस से इनिशिएट होंगी, और दोनों क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए दोनों एक दूसरे को रेपेल कर रहे हैं। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? वो दूर जाती हुई होंगी क्योंकि ये रेपेल कर रहा है। ये सिस्टम एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को रेपेल कर रहा है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो एक दूसरे से दूर जाती हुई हम शो करेंगे। और डायरेक्शन क्या होगा? इनिशिएट हो रही है पॉजिटिव चार्ज से, तो डायरेक्शन उसका ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई एक ऐसे सिस्टम की जिसमें दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। मान लो
एक हमारे पास मेटल स्ट्रिप है या एक कंडक्टर है जिसमें कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है उसके सरफेस में। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? सिंपली हमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है। और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए हमें जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है वो इससे इनिशिएट होता हुआ दिखाना है। ऐसे ही हम किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो याद रखनी है कि भाई जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इनिशिएट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। और कभी भी जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। साथ में जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जिस चार्ज से इनिशिएट हो रही हैं या जिस चार्ज पे एंड हो रही हैं उस पर परपेंडिकुलर होंगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो कि हमें याद रखनी है। तो हमने देखा था कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें पता करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E इक्वल टू, इट इज अ वेक्टर 1/4πε0 Q/r²। ओके, और इसका डायरेक्शन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है। अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। Let us suppose that there is a dipole in which the two opposite charges are of 10 microcoulomb। ये पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम है, जो दूसरा चार्ज है इस डायपोल का वो है -10 माइक्रोकूलम। ओके, एंड these charges are placed at a distance 10 centimeter apart। And we have to find out the electric field at a point which is 12 centimeter away from the midpoint of this dipole। मान लो this is A, this is B, तो A B का जो मिड पॉइंट है this is C and it is at a distance of 12 centimeter from this point P। We have to find out the electric field at this point। We have two charges 10 microcoulomb positive and -10 microcoulomb। They are placed at a distance of 10 centimeter and we have to find out electric field intensity at a point P which is 12 centimeter away from the midpoint of this dipole A, B। If the midpoint is C, then PC is 12 centimeter। From the geometry we can find out that the distance between A and P is, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो परपेंडिकुलर वो 12 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कि 13 सेंटीमीटर। ओके, सिमिलरली PB, ये डिस्टेंस भी क्योंकि ये राइट एंगल है तो ये भी 13 सेंटीमीटर। P is at a distance of 13 centimeter from the point B at which the charge is -10 microcoulomb and it is also at a distance of 13 centimeter from the charge 10 microcoulomb। तो इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो इस चार्ज की वजह से भी और इस चार्ज की वजह से भी है। तो लेट अस फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बिकॉज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। तो क्या होगा, EA at P will be 1/4πε0 Q 10 into 10 to the power -6 coulombs upon R square। R कितना 13 सेंटीमीटर, 13 into 10 to the power -2 whole square meter square। Okay, now we know that the value of 1/4πε0 is equal to 9 into 10 to the power 9 into 10 into 10 to the power -6 upon 169 13 का square into 10 to the power -4। So the intensity of electric field at point P because of the charge at A will be 5.3 into 10 to the power 6 Newton per coulomb। Okay, similarly the intensity of electric field at point P because of charge at point B, EBB, BP will be 1/4πε0 -10 into 10 to the power -6 coulomb upon 13 into 10 to the power -2 whole square।
and its value will be minus 5.3 into 10 to the power 6 Newton per Coulomb. Okay. Now the direction of this electric field at P because of EAP will be away from A in this direction. And the direction of electric field at P because of B minus 10 microcoulomb will be towards the point B. Okay. Now from this diagram it is clear that the resultant of this EAP and EBP will be perpendicular to the base AB. Okay. Now let us suppose that this angle is theta. This will also be theta because it is an isosceles triangle, and since these lines, this AB and this EABP, these are parallel, hence this angle will also be theta and this angle will also be theta because it will bisect the angle between EAP, BP and EBP. Okay, now we have to find out EABP. It is the resultant of EAP and EBP. From the geometry it is clear that EABP will be EAP cos theta plus EBP cos theta. इसको हम जब रिजोल्यूट करेंगे तो रिजोल्यूशन इस साइड होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और इसको जब हम करेंगे तो एक इस तरफ होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। ये जो साइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो कॉस कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो जो फाइनल जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ AB चार्जेस एट A and B will be EAP cos theta plus EBP cos theta, that is 5.3 into 10 to the power 6 into 2 cos theta. Okay, so it will be 10.6 into 10 to the power 6 cos theta. Now what is cos theta? Cos theta is in this triangle, this is theta, this side is 13 centimeter and this is 5 centimeter. Now we know that cos theta is based upon hypotenuse, so 10.6 upon into 5 by 13 into 10 to the power 6 Newton per Coulomb. This will be the intensity of electric field. Its value will come out to be 4.1 into 10 to the power 6 Newton per Coulomb. So now we will find out the electric field intensity because of a uniformly distributed charge. Let us suppose that there is a metal ring of radius A. Okay. The radius of this ring is A, and we have to find out the electric field intensity at a distance x from the center of this ring. It is given that the charge distributed over this ring is Q and it is uniformly distributed, that is each point of this ring has a uniform charge. We have to find out the electric field intensity at point P. So what we will do, first we will take a small particle of this ring Q at point Q, and since the total charge of the ring is Q, we will assume that the charge at point Q is TQ. Now we will find out the electric field intensity at point P because of this charge Q. So it will be given by the formula EQ will be 1 by 4 pi epsilon 0 dq because the charge is q upon, now this distance, we know that this is x and this is a and this is a right angle triangle, hence the hypotenuse will be root of a square plus x square. So the electric field intensity at P because of q will be EQ is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 dq upon root of a square plus x square का whole square, that is 1 by 4 pi epsilon 0 dq upon a square plus x square. Now the direction of electric field at P because of q will be away from the ring, okay, because it is positively charged. Now we will resolve this electric field in two parts. This will be EQ cos theta
and the other part will be EQ sine theta down, going down, because it is the electric field is going away from the charge. Now let us assume that the other part of this ring just opposite to Q is Q dash. It will also have a charge dq and it will create an electric field at point P. This electric field will also go away from the ring, from the point Q dash. So if the electric field because of Q dash at P is EQ, its direction will be this, and when we will resolve it, EQ dash, and when we will resolve it, it will come as EQ dash cos theta, and the sine component will be upward because it is going away. It will be EQ dash sine theta. Now since the charge dq is same and distance is same, so EQ dash and EQ are same, and EQ dash sine theta and EQ sine theta, these are equal in magnitude but opposite in direction, so sine component will cancel out. What will remain is the cos component. Now each particle of this ring will create similar resultant at point P, and the only component which will matter will be E cos theta. Okay. Why? Because all sine components will cancel out each other. Now in order to find out the resultant electric field at point P, what we have to do is to integrate EQ cos theta. Okay. Now EQ is 1 by 4 pi epsilon 0 dq upon a square plus x square, and cos theta is base upon hypotenuse, x by root a square plus x square. So in order to find out EQ, in order to find out E, we have to integrate EQ cos theta. Is integration of 1 by 4 pi epsilon 0 dq upon a square plus x square into x by root of a square plus x square. We have to integrate it. That is, E will come out to be x upon a square plus x square to the power 3 by 2 4 pi epsilon 0 into q for integration of dq. Okay, our final answer will be E is equal to q x upon 4 pi epsilon 0 a square plus x square to the power 3 by 2. This is the resultant electric field of the ring at point P. And the direction of this electric field will be going away from the ring because the ring is positively charged. Now let us consider a system of two charged particles, Q1 placed at A and Q2 placed at B. In this system, the charge Q1 is fixed, it cannot move, but the charge at B, Q2, it can move. Okay, and we have to move it from B to C. The distance between AB is R1 and between A and C is R2. This is R1 and this is R2. Okay. Now the charges Q1 and Q2 are exerting a force on each other. Either it is attractive or a repulsive force. Yeah. And we have to move charge Q2 from B to C. In order to move this, the force between particles Q1 and Q2 will have to do some work. When these charges Q1 and Q2 are at a distance r apart, then the force between them will be given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 r square. And suppose that this force moves the charge Q2 by a distance dr. Okay. In order to move this charge Q2 by a distance dr, the force will have to do some work, which will be dw will be 1 by 4 pi epsilon 0 force into distance Q1 Q2 r square into dr. Okay. Now when this force moves the charged particle
at B Q2 to C. The total work will be given by, we will simply integrate dW, integration of dW, and the limits will be R1 R2 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square TR. We will have to integrate it and we will find out the total work done by the system. So W will be Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 1 by R1 R2 minus 1 by R1. Okay, this is the total work done. Now let us come back to the point when the distance between A and B was R1, when the charged particle at B, which is Q2, didn't move. In this position, the system AB has a potential energy. Okay, and when the charged particle moved from B to C, the potential energy of the system changed. And what will be the change in the potential energy? Del U, which will be UR2 R1 minus UR2. It will be minus of the total work done. That is, it will be Q1 Q2 4 pi epsilon 0 1 by R1 minus 1 by R2. This will be the change in potential energy of this system A and B. Now let us suppose that the charge at A, which is fixed, is Q1, and the other charge, the second charge, was initially at a reference point which is too far from A. That is, we can take that distance as infinity. So initially the other charge was at infinity, and we brought that charge from that reference point, which is at a very wide distance, to a point B, which is at a distance R from A. Okay. So when the second charge Q2 was at infinity, the potential energy of the system will be given by U infinity is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square. R in that situation is infinity. Okay. Okay. Now 1 by infinity is 0, so U infinity will be 0. But when the charge came to B, when the charge Q2 came to B, then its potential energy will be UB is equal to 1 by, or UR is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. Change in potential energy will be LU is equal to U R minus U infinity, and it will be 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. So the potential energy of a system of two charges which are separated by a distance R will be 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R. Let us suppose that the system contains more than two charge particles. Let us say there is Q3. Then in order to find out the total potential energy of that system, first we will find out the potential energy of each pair, this pair, this pair and this pair, and we will simply add all the potential energy and get the total potential energy of that system. Now we describe the electric field due to the charge Q in a region by assigning a certain vector E at each point of that region. Same can be done by assigning a scalar quantity V in that to each point in that region. That scalar quantity V is known as potential, electric potential. Okay. The idea of potential comes from the change in electric potential energy of a system of charges. Suppose that all other charges in an electric field are fixed and a charge Q is moved from A to B. The potential energy at point B was UB and at point A is UA. Then the change in potential energy in moving the charge from B to A will be UB minus UA.
Now we define the potential difference between these points A and B as UB minus UA upon Q, this charge Q. UB minus UA by Q will give us VB minus VA, the potential difference between the point B and A. We can also say that the change in potential energy in moving a charge Q from B to A, when the potential difference at point B and A is VB minus VA, will be equal to UB minus UA is equal to VB minus VA into Q. Okay. Now let us suppose that the point A, from which we have moved the charge Q towards the system of electric field, was at a infinitely large distance. The distance between the system and the point A was too large. So in that situation, the energy at A will be U infinity and it will be 0. We have seen that. So the change in potential energy in bringing the charge from infinite distance to point B will be UB, UA will be 0 is equal to VB minus VA Q. Now the potential at infinity is also considered as 0. So UB will be VA Q. So potential A will be given by change in potential energy upon Q. VA is equal to UB by Q. Now we have seen that UB is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q by R. R is the distance between the system and the charge particle Q. So VA will be VB will be 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q by R divided by Q. So the potential at point B because of charge Q1 will be VB is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R. This is the potential, electric potential due to a charge Q1 at a distance R from that charge. Okay. So we can define the potential at a point A in an electric field by saying that the potential is the change in potential energy per unit charge in moving a test charge from infinity to that point A. Now let us suppose that we are moving this particle Q in a manner that its kinetic energy remains same, it doesn't change. Then in that case, the external work done in moving that particle from infinity to point A will be negative of the total work done by the internal forces of the system. That is, if the kinetic energy remains same, AE of charged particle remains same or equal to constant. In that case, W external, the work which has been done in moving that particle, plus W internal, the work because of the electric field will be 0. Okay, because the kinetic energy remains same. That is, W external will be negative of W, the work done by the electric field. We have seen that the work done by electric field is negative of change in potential energy of the system. That is, W external will be negative of change in potential energy. That is, work done by the external forces will be change in potential energy. So we can also define the potential at a point A in the electric field as the total work done by the external agents in moving a test charge from a reference point which is at an infinite long distance to that point A in such a manner that the kinetic energy of that charge Q remains constant, it doesn't change. The potential at point A in an electric field will be given by VB 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R. Q1 is the charge because of which the electric field is being generated, and R is the distance of that point in the electric field from the
चार्ज